friends, this is Sakshi and you're watching Sairaj Parab channel. Today I have come with a new delicious and healthy recipe, yes, which is Shahi cheese Shev Puri. And specially this is a very special attraction of our, yes, Mumbai Chowpatty. So without wasting time, let's start. So at the beginning we have taken this bowl. We'll mix some ingredients in this bowl which will really save time in this today's hectic life. These are some boiled potatoes. Some finely chopped onion. Some tomatoes. Some sprouts and beans. These are some boiled sprouts and beans. These are very healthy for our body. So these are very necessary ingredients. Pinch of salt, coriander, and now we'll mix it well. It will give more taste. We'll keep this aside and we'll take chapta puris. We'll arrange this on the plate. हमें इस तरह इसे अरेंज करना है. जो हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से, तो हम इसे हाथ से ही परोसेंगे क्योंकि प्यार से बनाई हुई चीज़ और हाथों से जो लगाते हैं हम, उससे प्यार ज़रूर उतर आता है. तो ये मैंने पुदीना चटनी बना ली है. इसमें मैंने हरी मिर्च, कोरिएंडर और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है. हम इसे इस पर लगा देंगे. अपने टेस्ट के अनुसार हमें इसे डालना है. अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा तीखा डाल सकते हो. थोड़े मीठे के लिए मैंने ये खजूर की चटनी जो है वो बना ली है. इसमें मैंने खजूर और थोड़ा सा जैगरी मिक्स किया है. अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा जैगरी डाल सकते हो. Our special Shahi ingredient, this is cheese. Wow. Oh my God. We'll take this to spread it. इससे बहुत ही शाही टेस्ट आने वाला है इस शेव पूरी को, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ टेस्ट के लिए. So I'll add some shev. To make this shev puri more shahi, I'll add some foods because decoration is a very important part of our dish. And some grapes. And we'll also add some coriander to it. And yes, our delicious Shahi cheese Shev Puri is ready. Yes, dear friends, please don't forget to subscribe this channel. Thank you for watching this video and please like, share and comment.